से कर्ज है, गुरुदेव यह आशीष है, जो सोचने का फर्ज है। हम पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के, नित्य नेम के, सर्वधर्म के, सत्कर्म के, ओछे दूरी बात की, अन्याय की, अभिमान की, सेवा करन को दास की, परवाह नहीं हो जान की। छोटे न हो हम बुद्धि से, वो विश्वमय से ईशमय, वो राममय और कृष्णमय, जगदेवमय जगदीशमय। अयताप कर हम वीर हो, अति वीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म का गंभीर हो। अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, अध्यात्म की शक्ति हमें कल भी नहीं कर दे जुदा। इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे, कर मौत भी आखिरी, सुख दुख हमें से संग रहे। ये थोड़ा धीरे चलती है प्रेयर, एक्चुअली पहले बताया नहीं गया. So anyways, today's topic is commonly found errors in reporting practices. Particular topic से आपने सोचा होगा ना कि यार ये क्या टॉपिक है. कंपनीज क्या क्या एरर कर देती है, ऐसे एरर जो ऑन द फेस को नजर नहीं आते बट होते हैं. जैसे इन डेज के अकॉर्डिंग कुछ रिपोर्ट करना है उनको, तो उसमें रिकग्निशन क्राइटेरिया. So बहुत सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर हमें कई सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करना होता है. तो जिसमें सबसे पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड नॉन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. फिर जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं वो कंपनी किससे गवर्न हो रही है. कंपनीज एक्ट से ऑल कंपनीज आर गवर्न. So then there are disclosure requirement related to Companies Act. And then किस पर्टिकुलर और किसी रेगुलेशन से वो गवर्न हो रही है क्या. तो जैसे मान लीजिए कोई एनबीएफसी है, बैंक्स है, तो दे आर गवर्न्ड बाय वेरियस आरबीआई रेगुलेशंस. एंड देन सपोज इंश्योरेंस कंपनी है, भाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इडा, उसके जो रेगुलेशंस है उसके तहत. Then there are so many disclosure requirement in accounting standards, disclosure requirement in schedule 3 of the Companies Act, or the respective schedule of those act which governs the respective companies. Banking Regulation Act, वहां पे भी एक शेड्यूल 9 है जिसके तहत बैंक्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने होते हैं. So there is a board of the institute, Financial Reporting Review Board. ये रिव्यू बोर्ड क्या करता है, ये बहुत सारी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सुओ मोटो और डिपेंडिंग ऑन सम इंक्वायरीज आल्सो दे कॉल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इनकी वो स्टडी करता है थ्रू वेरियस ग्रुप्स, थ्रू सम टेक्निकल रिव्यूअर्स, और उसमें वो देखता है कि ये सारी कंपनीज किस तरीके की मिस्टेक्स कर रही है, किस तरीके की एरर्स कर रही है while doing the फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और इनके ऑडिटर्स किस तरीके के मिस्टेक्स कर रही है, किस तरीके के एरर्स कर रहे हैं. कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑडिटर्स को ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देना था, उसने ट्रू एंड फेयर व्यू दे दिया, इवन दो देयर आर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस इन द ऑडिट रिपोर्ट.
या कहीं एम्फेसिस ऑफ मैटर की जगह क्वालिफिकेशन की जगह एम्फेसिस ऑफ मैटर दे दिया, तो इस तरीके के एरर्स जो है वो ऑडिटर्स करते हैं। तो व्हाट इंस्टीट्यूट हैज डन और इंस्टीट्यूट हैज बीन डूइंग is that they compile such type of errors from time to time. तो अभी रिसेंटली एक पब्लिकेशन आया था इंस्टीट्यूट का, सो बेस्ड ऑन दैट guide you that what are those common errors which are being done by various companies in course of their financial reporting. तो उस पे हम चर्चा करेंगे। तो over to the entire team of speaker to dwell upon the topic, और उसके बाद wherever required I will try to explain. पल्लवी ऑन है ना? इन दी मीटिंग 69 आ रहा है लेकिन है 48 ही, पता है नहीं। चलो तुम शुरू करो। Good afternoon, everybody. I, Pallavi Joshi, with my fellow friends Muskan Jain and Shreya Malani, are going to discuss about the topic commonly found errors in reporting practices in this paper. So, in this, three topics are going to be covered. First, error related to financial information, error related to non-financial information, and industry-specific information. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड एरर, सो बेसिकली इसको एक्सप्लेन ऐसे किया है कि कंपनी क्या गलती करती है तो वो ऑब्जर्वेशन में बताया है, और तू चालू रख, तेरा पढ़ाई। और इंडियस क्या सजेस्ट करता है उसके रिगार्डिंग, तो वो अपन को एक्सप्लेन कर रखा है इसमें। तो इसमें बताया है कि कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडियस 40 के तहत डिस्क्लोजर्स नहीं देती है। तो इंडियस 40 के अकॉर्डिंग कंपनी को क्या डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के मेजरमेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसी में बतानी पड़ती है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस पे मेजर करेंगे, कॉस्ट पे, फेयर वैल्यू पे, इस पे। उनको डेप्रिसिएशन मेथड्स को, डेप्रिसिएशन रेट जो वो यूज करते हैं वैल्यूएशन के टाइम पे, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम इनिशियली कॉस्ट रिकॉग्नाइज करते हैं। Next point is disclosure of rental income and direct operating expenses. So कंपनी के डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं तो कंपनी को रेंटल इनकम और डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिस्क्लोज करना पड़ता है। बट व्हाट इफ कंपनी ने नहीं किया तो सबसे पहले जो आता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर दोनों भी टाइप की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कवर होती है। लाइक कोई भी लैंड बिल्डिंग तो अपन वो रेंटल पर्पस के लिए ले या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, तो उन दोनों से भी रिलेटेड अपन को रेंटल इनकम या हो या फिर डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दोनों का डिस्क्लोजर देना पड़ता है। और थर्ड है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ऊपर मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट पे वैल्यू करना पड़ता है, ठीक है। अब और ये भी बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसके मेजरमेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी बनाई और अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में लिखा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे मेजर करेगी। बट तो इंडियस क्या कहता है, इंडियस कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी तो बनानी पड़ती है, वो बात सही है, बट आप फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं मेजर करना पड़ेगा। और हाँ, फेयर वैल्यू का आप कैलकुलेशन कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, बट सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए। वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट पर ही होगी। उसके बाद आता है अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का अपन ने इंडियस 115 में पढ़ा था कि 5 स्टेप मॉडल होता है। तो कंपनी को इससे रिलेटेड डिस्क्लोजर देना पड़ता है। 5 स्टेप मॉडल में क्या है, सबसे पहले रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, किस कस्टमर के साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किस पार्टी को क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी करनी है। तीसरा, उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिसाइड होगी। चौथा, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपन ट्रांजैक्शन प्राइस का अलोकेशन करेंगे। तो अलोकेशन से मतलब क्या समझते हो? से फॉर एग्जांपल मैंने किसी पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे क्या करना है, मुझे आपको वॉशिंग मशीन बेचनी है विद द रिपेयर सर्विस। तो रिपेयर सर्विस मैंने आपको बोला कि आप 1 साल बाद तक अगर आपका कुछ
रिपेयर की आपको सर्विस लेनी होती है तो आप ले सकते हो। तो मैं जब उस पार्टी से पैसे चार्ज करूंगी तो मैं क्या सिर्फ वॉशिंग मशीन के लिए करूंगी? नहीं, मैं वॉशिंग मशीन और जो दोनों के लिए करूंगी। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने 60,000 रुपए किसी पार्टी से लिए, तो 60,000 रुपए टोटल मैं वॉशिंग मशीन में एलोकेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो 60,000 रुपए मैंने वॉशिंग मशीन प्लस जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की मैं सर्विस दे रही हूँ दोनों के लिए लिया है। पांचवा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जब सेटिस्फाई हो जाती है तो उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दो। फिर आती है एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर। तो जैसे अपन बात कर रहे थे ना कि भैया अपन क्या रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो उस रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस से रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं। तो रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर होने का मतलब क्या है? तो रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर होने का मतलब है कि जब आप एसेट की ओनरशिप दे देते हो सामने वाले कस्टमर को कि उसके पास एबिलिटी है कि वो उसको डायरेक्टली यूज कर सकता है, उससे सारे बेनिफिट ले सकता है। फिर आता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन होती है कि लोग रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर्स प्रॉपर्ली नहीं देते। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं पार्टी डिस्क्लोजर देना है, बट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि हमारी रिलेटेड पार्टी तो है बट हमने पिछले साल के दौरान रिलेटेड पार्टी के साथ में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया तो हम डिस्क्लोजर नहीं देंगे। तो इंडिया 24 कहता है कि भले ही आपने उस पार्टी के साथ में ट्रांजैक्शन किया है या नहीं किया है, आपको रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ केएमपी। तो केएमपी की डेफिनेशन कोई भी पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग of the activities of the entity, whether directly हो indirectly हो, कोई भी डायरेक्टर इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे फिर अदरवाइज हो। फिर आता है डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी। It was noted in some cases from the related party transaction that the debentures were issued to the holding company. However, the amount outstanding towards disclosed. तो एंटिटी ने क्या किया, सामने वाली पार्टी के साथ में ट्रांजैक्शन किया तो उनको डिबेंचर्स इशू किए थे। अब उन्होंने अपने डिस्क्लोजर में ये तो बता दिया कि हमने डिबेंचर्स इशू किए, बट क्या कितना उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था तो ये नहीं बताया। तो इंडिया 24 कहता है कि रिलेटेड पार्टी को नेचर तो बताना ही है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ, साथ के साथ में द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस इंक्लूडिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस, वेदर दे आर सिक्योर्ड एंड द नेचर ऑफ द कंसिडरेशन टू बी प्रोवाइडेड इन द सेटलमेंट एंड एनी ऑफ द डिटेल्स ऑफ गारंटी गिवन और रिसीव्ड। ये सारी डिटेल्स भी आपको देनी पड़ती है। सिर्फ नेचर बताने से कुछ नहीं होगा, ये सारी डिटेल्स भी आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद आता है डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू केएमपी। It was observed in a few cases in case of KMP whether the disclosure of remuneration paid to them was not made in accordance with the requirements. तो requirements क्या है? आप डायरेक्टर्स को, उन लोगों को जो remuneration देते हो KMPs को, उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है? An entity shall disclose KMP compensation in total for each of the following categories: short-term employee benefits, post-employment benefits, long-term benefits, termination benefits, share-based payments. जो भी आप उनको दे रहे हो ना, जिस भी तरीके से, उन सब का डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ 7 क्या कहता है? कुछ कंपनीज हैं जो कि कैश फ्लोज बनाने से एग्जम्प्ट भी नहीं है, तब भी वो कैश फ्लोज नहीं बना रही है। तो इंडिया 7 कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा हो, बड़ा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विस हो, आपको कैश फ्लो बनाना पड़ेगा। फिर आता है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो ये अकाउंट क्या होता है? एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो बताती हूँ किस लिए इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए कि मैं एक्सपोर्टर हूँ, सो बेसिकली होता क्या है, मेरे पास फॉरेन करेंसी रिसीवेबल होती है, इंपोर्टर हूँ, पेबल होती है। तो फॉरेन करेंसी को मुझे क्या करना पड़ता है? मैंडेटरली उसको, और बैंक पॉकेट में तो करेगा नहीं, तो बैंक क्या करता है? इसके लिए चार्जेस कलेक्ट करता है। बट अपन को तुरंत कराएंगे तो अपन को बैंक को चार्जेस देने पड़ते हैं कन्वर्ट करने के लिए। एडवांटेज है, अगर आप इस अकाउंट के अंदर अपना फॉरेन करेंसी का पैसा पार्क करते हो तो उस केस में आप, जैसे मान लीजिए इस मंथ मेरे पास पैसे आए तो मैं अगले महीने की आखिरी तारीख तक मेरे को उसको कन्वर्ट नहीं कराना पड़ता। क्वेश्चन आता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, आज कन्वर्ट नहीं करा रहे, 1 महीने बाद तो कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो इसका फायदा ये है, तो जैसे मान लीजिए मैं एक्सपोर्टर हूँ, मेरे को $1,00,000 आए, मेरा 0.50 पैसा बैंक चार्ज करती है, तो मेरे को 50,000 रुपए उसको कन्वर्ट कराना पड़ा, ठीक है। उसके बाद तुरंत मेरे को 50,000 देने पड़े। इंपोर्टर हूँ, मेरा फॉरेन करेंसी गया, फिर से कन्वर्ट कराना पड़ा, फिर से मुझे पैसे देने पड़े।
$1,00,000 मेरे को पेबल थे, तो मेरे को फिर से 50 पैसे के हिसाब से 50,000 देने पड़े, तो टोटल खर्चा आ गया मेरा 1,00,000 का। बट इन केस अगर मैं इस अकाउंट में पार्क करती, तो मेरा जैसे मान लो आया मेरे पास $1,00,000, गया मेरे पास $1,00,000, उस एक महीने में ही मेरे दोनों ट्रांजेक्शन हो गए, तो मेरे को बार बार वो जो बैंक से कन्वर्ट कराने का पैसा है वो नहीं देना पड़ा। ठीक है, तो इसका ऐसे यूज किया जाता है। सोरेन क्या कहता है, कंपनी ने इसमें क्या किया, कंपनी ने क्या किया, इट वाज ड्यू दैट द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस आर नॉट डिस्क्लोज्ड। सो इंड AS 7 says that the unrealized gains and losses arising from the change in foreign currency exchange rate are not cash flows। तो मेरी एक्सचेंज रेट में जो ऊपर नीचे होता है उसकी वजह से जो गेन और लॉस होता है वो कैश फ्लोज नहीं होते, बट मुझे उनका इफेक्ट जो होता है वो रिपोर्ट करना पड़ता है। फिर आता है प्रेजेंटिंग एडवांस फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। सो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आई कि जो एडवांस फॉर टैक्स है कंपनी दिखा रही थी लोन से को प्रोविजन में दिखा रही थी वो, तो इंडिया कहता है कि जो एक कंपनी है उसको इनको सेट ऑफ करके दिखाना पड़ता है ओनली एंड ओनली। तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो तो आप इनको अलग अलग नहीं दिखाओगे, आप इनको सेट ऑफ करके दिखाओगे। सो इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, कंपनी को शो करना पड़ता है इफ इट हैज अ लीगल एनफोर्सेबल राइट टू सेट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड अमाउंट्स, intends either to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously, and an entity normally have a legal enforceable right to settle against a current tax liability when the income tax levied by the same taxation authority. Next, offsetting of deferred tax assets and deferred tax liability। तो DTA DTA भी सबको पता है, तो इसके अंदर भी अपन को नेट बेसिस पे दिखाते हैं, दोनों को अलग नहीं दिखाते हैं। तो इंड AS 7 वही कहता है कि एक एंटिटी को इनको ऑफसेट कर राइट है और सेम टैक्सेबल एंटिटी है डिफरेंट टैक्सेबल एंटिटी in which it intends either to settle current tax liabilities and assets on a net basis and settle the liabilities simultaneously in each future period and with significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered. Next आता है convincing evidence। तो convincing evidence क्या होता है, तो जब अपन DTA का DTA के अंदर दो चीजें थी कि एक आप कैरी फॉरवर्ड लॉसेस और डेप्रिसिएशन के केस में कैसे DTA रिकॉग्नाइज करोगे, और एक आप अदर आइटम्स के केस में कैसे DTA रिकॉग्नाइज करोगे। तो अपन क्या बोलते हैं कि रीजनेबल एश्योरेंस भी है। DTA क्या होता है कि फ्यूचर में अपनी इनकम होगी जिसके रेस्पेक्ट में DTA का रिवर्सल होगा अपन, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे को ऐसा एस्टिमेट ही नहीं है कि मेरी फ्यूचर में इनकम होगी, मतलब दो मैंने आपको आइटम बताया, एक तो मैंने कौन सा बताया डिप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड लॉस वाला, एक अदर आइटम। तो अदर आइटम्स के केस में मुझे रीजनेबली ऐसा लगना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में इनकम होगी, इनकम होगी तो उसके अगेंस्ट में मैं उस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के केस में क्या होना चाहिए, मुझे वर्चुअल सर्टेनिटी होनी चाहिए कि मतलब पक्का पक्का होना चाहिए कि मेरे पास फ्यूचर में इनकम होगी तो ही मैं उसको रिकॉग्नाइज करूंगी। सो कन्विंसिंग एविडेंस होना चाहिए मेरे को, तभी उन दोनों केसेस में मैं क्या कर सकती हूँ, DTA को रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ। It was observed that the notes to accounts included a note that deferred tax assets have been recognized on unused tax losses or tax credits only to the extent that the entity has sufficient taxable temporary difference or there is a convincing other evidence। Convincing other evidence मतलब मेरे पास एविडेंस होना चाहिए कि मेरे पास सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट होंगे। फिर डिस्क्लोजर ऑफ प्रोविजंस इन सर्टेन केसेस, it was observed that the note on provisions disclosed provision towards decommissioning liability, but there were no further disclosures made in the financial statements। So Ind AS क्या कहता है कि आपको provisions के respect में the carrying amount of the beginning and end of the period इसका देना पड़ता है, additional provision जो आप बनाते हो, amounts used, unused amounts reversed, the increase during the period in the discounted amount and the effect of any change in the discount rate, ये सारे related आपको फिर आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड इसमें है कि जो कंपनी होती है वो जनरली इनको टेंजिबल एसेट्स में दिखा देती है। तो AS 1 और कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 डिवीजन 2 के तहत इनको अपन को ऐसे नहीं दिखा सकते, अपन को
टेंजिबल एसेट्स ऐसा करके कुछ भी नहीं दिखा सकते। उसके बाद आता है डिस्क्लोजर ऑफ द रिस्क इन्वेस्टमेंट इन प्लान एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन प्लान एसेट्स क्या होता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वाला जो इंडेक्स होता है ना, उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज को फ्यूचर में जो अपन पे करने वाले होते हैं, तो फ्यूचर में अपन उनको कुछ पे करना चाहते हैं, तो आज अपन क्या करते हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम फ्यूचर अपने लिए अवेलेबल रहे, अपन उनको पे कर सके। तो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन एसेट्स में ताकि एम्प्लॉयज को फ्यूचर पे कर सको, तो उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको रिस्क का भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं, रिस्क का भी डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। फिर आता है एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में बता रखा है, अकाउंटिंग पॉलिसी कहती है कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है और अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस उनको उन्होंने कैपिटलाइज में दिखा दिया। तो इसमें बता रखा है कि पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ द पीपी कंप्राइजेस इट्स परचेज प्राइस एंड एनी कॉस्ट directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन को देखना पड़ेगा कि क्या वो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल है, अपन उसको कैपिटलाइज करके दिखा सकते हैं। फिर आता है डायरेक्टर सेटिंग फीस। तो अपन को पता चला कि कंपनीज यूजुअली क्या करती है, डायरेक्टर सेटिंग फीस को अदर एक्सपेंसेस में दिखा देती है, बट यहाँ पे नहीं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वाला कहता है कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन में अपन इसको अदर एक्सपेंसेस में नहीं दिखाएंगे, अपन इसको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। डेफिनेशन में कवर होता है, एम्प्लॉय की डेफिनेशन में मतलब डायरेक्टर कवर होता है। एंड एम्प्लॉय में प्रोवाइड सर्विस टू एन एंटिटी ऑन अ फुल टाइम, पार्ट टाइम, परमानेंट, कैजुअल और टेम्परेरी बेसिस, एंड एम्प्लॉयज इंक्लूड डायरेक्टर। तो डायरेक्टर इसलिए अपन को दिखाना पड़ता है, वेदर वो फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो या फिर कोई अदर मैनेजमेंट पर्सनल। फिर आता है डिस्क्लोजर ऑफ द अमोर्टाइजेशन पीरियड एंड द अमोर्टाइजेशन मेथड। सो अपन को ऑब्जर्वेशन मिली कि जो कंपनी है उसने अमोर्टाइजेशन पीरियड और अमोर्टाइजेशन मेथड डिस्क्लोज नहीं किया। तो इसमें बता रखा है इंडियाज 38 इंटेंजिबल एसेट्स के थ्रू कि अमोर्टाइजेशन पीरियड और मेथड आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है इन केस ऑफ फाइनाइट यूजफुल लाइफ वाली इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स की भी अभी दो कैटेगरी है, फाइनाइट यूजफुल लाइफ वाली, इनफाइनाइट। फाइनाइट लिमिटेड, जैसे कि लाइसेंस हो गया, तो लिमिटेड टाइम के लिए 5 साल, ट्रेडमार्क जो लंबे टाइम तक चलता है। तो फाइनाइट केस वाली उसके अंदर आपको अमोर्टाइजेशन पीरियड और अमोर्टाइजेशन मेथड का डिस्क्लोजर देना पड़ता है। इंटेंजिबल एसेट्स विद इनफाइनाइट लाइफ। तो इनफाइनाइट लाइफ वाली केस में अपन क्या करेंगे, इनफाइनाइट लाइफ वाले केस में अपन अमोर्टाइजेशन चार्ज ही नहीं करते हैं, क्योंकि फाइनाइट वाले केस में तो अपन को पता है ना कितने साल के लिए है, इनफाइनाइट केस में अपन मेजर ही नहीं कर पा रहे, तो उसके अंदर अपन अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करते। अपन इंडियस 36 के अकॉर्डिंग हर साल उसमें इम्पेयरमेंट लॉस लगाते जाते हैं। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। सो इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, तो जो रिसर्च के खर्चे होते हैं, अब रिसर्च तो भैया आप पता फेल हो गए, 50 वाली पास हो गई, तो थोड़ी ना 50 भी रिसर्च के पैसे को आप कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। तो रिसर्च का पैसा जो हमेशा होता है वो एक्सपेंस होता है, और डेवलपमेंट का पैसा जो होता है वो कैपिटलाइज होता है। तो कंपनियां क्या गलती कर रही थी, कंपनी कर रही थी पॉलिसीज, कंपनी बता रही थी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट अमाउंटिंग टू दिस मच ऑफ रुपीस हैज बीन इंक्लूडेड इन एसेट। तो इसमें क्या बता रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब इसके अंदर तो ये ऐसा दिखा रहा है कि रिसर्च और डेवलपमेंट दोनों इंक्लूड हो गए, जबकि अपन ने क्या सीखा कि रिसर्च वाले खर्चे एक्सपेंस होते हैं और जो डेवलपमेंट वाले खर्चे होते हैं वो कैपिटलाइज होते हैं। सो इंडिया 38 यही कहता है कि आपको टर्मिनोलॉजी को ढंग से बताना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च के खर्चों को अपन एक्सपेंस करते हैं। Next है inappropriate lease disclosures. It was observed that the accounting policy in books of lessee stated that the leased assets are depreciated over the period of lease term, where no reference to the useful life of an asset or lease term. So इसके अंदर ऑब्जर्वेशन ये आई है कि जो कंपनी है वो लीज्ड एसेट्स को ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म डेप्रिशिएट कर रही है। जैसे कि लीज अपनी 5 साल की है, तो 5 साल की लाइफ में
assets है, that is the ROU asset. अपन उसको क्या कर रहे हैं, depreciate करते हैं. But India's 116 कहता है कि ऐसा सही नहीं है. क्यों? क्योंकि लीज भी दो टाइप्स की होती है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंसिंग लीज. ऑपरेटिंग लीज ठीक है स्पेसिफिक पीरियड के लिए. फाइनेंसिंग लीज जिसमें अपन क्या करते हैं, उस लीज के टर्म के एंड होने के बाद सामने वाले पर्सन को वो ट्रांसफर कर देते हैं. तो देखो, जब आपको पता है जैसे ऑपरेटिंग लीज के केस में अपन जो ROU एसेट की कैलकुलेशन है वो उन्हीं स्पेसिफाइड ईयर्स का पीवी लेके करते हैं. बट जो अपनी फाइनेंसिंग लीज है उसके अंदर जब अपन ROU एसेट की भी कैलकुलेशन करते हैं तो माइंड में रखते हुए करते हैं कि अपन इसको लीज टर्म के बाद में एक्वायर कर लेंगे. तो जब अपन ROU एसेट की कैलकुलेशन में लीज टर्म खत्म होने के बाद जो उसकी वैल्यू हो सकती है उसको इंक्लूड करते हुए करते हैं. तो डेप्रिसिएशन भी फिर फाइनेंसिंग के केस में कब तक होना चाहिए, उसकी पूरी यूजफुल लाइफ तक. ऑपरेटिंग के केस में अपन लीज टर्म को ध्यान में रख के ROU की कैलकुलेशन को ध्यान में रख के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना चाहिए. बट फाइनेंसिंग के केस में अपन लीज टर्म के बाद भी ये सोचते हैं कि सामने वाली पार्टी उसको परचेस कर लेगी, ROU एसेट की कैलकुलेशन करते हैं. तो फिर उस पे जो डेप्रिसिएशन है वो भी उसकी पूरी यूजफुल लाइफ में लगना चाहिए. De-recognition of investments. It was viewed that the entity de-recognized investment in the equity instrument measured at a fair value through OCI during the reported period, but failed to give the necessary disclosures. तो अगर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो उसको आप डी-रिकॉग्नाइज करते हो तो आपको रीजंस फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द डेट ऑफ डी-रिकॉग्निशन, क्यूमुलेटिव गेन और लॉस ऑन द डिस्पोजल, और ये सारी चीजों का भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है. And additionally requires the entity to disclose dividends related to investments de-recognized during the reporting period separately from the dividends recognized during the period. पल्लवी, आज जो तेरा ऑडियंस है ना यहाँ पे बैठा हुआ, वो कैसा है? है? तुम जो बता रही हो ना वो उनके सबके ऊपर से जा रहा है. Yes or no? हमारे को जब बात करनी चाहिए वो ऐसे करनी चाहिए. तुम अभी कैसे कर रही हो, जैसे कि तुम्हारे सारे जो साथी है ना वो तुम्हारे बैच वाले हैं जिन्होंने कुछ कुछ पढ़ रखा है. ये जो ऑडियंस है ये वो है जिन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ. तुम ऐसे आजकल तो बुलेट ट्रेन का जमाना है ना. मोदी जी कल बोल रहे थे ना कि बुलेट ट्रेन अभी आ जाएगी सूरत से लेके बॉम्बे तक. तो अपने ऑफिस में तो पहले ही आ गई बुलेट ट्रेन. इधर तो बुलेट ट्रेन का जमाना हो गया, इधर हम रेलगाड़ी से चल रहे हैं, छगड़ा गाड़ी से चल रहे हैं. तो आपको उनके लेवल पे आना पड़ेगा. आप उनको उस तरीके से समझाओ ताकि इनको पहले वो कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है और ये इसके अंदर इस तरीके की एरर करते हैं और इसका ये सॉल्यूशन. ये आप समझाओ इनको, क्योंकि अभी सबको नींद आ जाएगी यहाँ पे. हाँ हाँ कंटिन्यू करो. Valuation of inventories. It has been observed the accounting policy related to the valuation of inventories specify that certain categories of inventories, usually raw material stores and WIP, are valued only at cost with no reference to NRV. In certain other cases, it was observed that the accounting policy refers to the lower of cost or market value rather than net realizable value. What India suggests, inventory should be valued at the lower of cost and NRV. Inventories refer to all categories of inventories and requirements apply to all categories of inventories, including raw material, finished goods, etc. Second observation, company have not disclosed the cost value where the company have mentioned that the inventories are valued at NRV. What India suggests, companies should disclose the component of cost appropriately with respect to raw material, stores and spares, WIP and finished goods, irrespective of the fact that whether the valuation is based on NRV. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कि हम
यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि एनआरवी का कोई रेफरेंस नहीं दे रहे, तो गलती क्या हुई कि एनआरवी शुड आल्सो बी रेफर्ड। आप केवल कॉस्ट की बात मत करो। कई बार अपने को लगता है कि यार कॉस्ट पे तो वैल्यू हो रहा है, एनआरवी पे तो अपन कुछ देखते ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, चाहे वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो इंडियन गैप, चाहे वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, जो नए वाले स्टैंडर्ड्स हैं विच आर एप्लीकेबल ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड कंपनीज ओनली। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा क्या कह रहे हैं बताओ? Company have not disclosed the cost value where the company have mentioned that inventories are valued at NRV। उल्टा कॉस्ट नहीं बताई। NRV पे रिपोर्ट कर रहे हैं। सही है क्या ये? ये सही नहीं है। Cost और NRV lower should be disclosed. So company should disclose the component of cost appropriately with respect to the all these items: raw material, stores and spares, work in progress, finished goods, irrespective of the fact that valuation is based on NRV। कई बार ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर कंपनी में कि आप उसका वैल्यूएशन, क्योंकि उसका एनआरवी कम हो गया है ना, आपने बहुत सारा स्टॉक खरीद लिया और वार हो गई, यूक्रेन और रशिया की वॉर हो गई, और व्हाट इज योर स्टॉक? योर स्टॉक इज से ऑयल जो आपने इंपोर्ट किया हुआ है। तो क्या होगा अगर वॉर हो रही है? तो क्या होगा? प्राइस सपोज नीचे आ गए उसकी वजह से कि अरे यार, तो जिसका जो माल है उसको बेचो। तो क्या होगा? जब सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा? प्राइस कम होंगे। और जो प्राइस कम हुए तो आपने कहा कि यार इसका एनआरवी कम है, इसको यहाँ पे रिपोर्ट कर दो, बट आपने अपनी बुक्स में ये नहीं लिखा कि कॉस्ट क्या है। सो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दैट इज ऑल्सो नॉन कंप्लायंस। कॉस्ट एंड एनआरवी बोथ शुड कम एज योर अकाउंटिंग पॉलिसी, एंड ऑब्वियसली जब भी अपन उसको अकाउंट फॉर करेंगे, वी विल अकाउंट फॉर एट व्हाट वैल्यू? लॉर ऑफ कॉस्ट एंड समझिए पल्लवी? Yes, sir. Nature of government grant observation: in certain cases, it was noticed that the accounting policy for government grant was generic without specifying the nature of the grant, leading to ambiguity in terms of appropriateness of the accounting treatment. So entity ने nature नहीं बताया grants का. What India's 20 is to account for grant based on their nature, that is, grants related to asset, grants related to income. Accordingly, both the nature of the grant and accounting treatment will need to be provided in the accounting policy in order to give a complete understanding. इंडेस 20 क्या कहता है? आप तो इंडेस एस 12 की बात कर लेते हैं अपन, कोई खास बात नहीं, अपन ने तो एस ही पढ़ा हुआ है। नहीं है ना? तो नई पीढ़ी के लोग एस पढ़ेंगे, केवल एस पढ़ेंगे, काम चलेगा क्या? चलो अब अपन इंडेस पे आ जाते हैं। तो इंडेस में इन्होंने ग्रांट होती है और रेवेन्यू ग्रांट होती है। तो कैपिटल ग्रांट को अकाउंट करने का एक अलग तरीका है, कैपिटल को अकाउंट करने का एक अलग तरीका। तो इन्होंने कहा कि साहब आपने ग्रांट की अकाउंटिंग पॉलिसी तो लिखी है, और कैपिटल का अलग अलग ट्रीटमेंट को आपने स्पेसिफाई नहीं किया। आपने क्या कर दिया, जैसा आप करते हो ना, आप क्या हो सकता है कैपिटल आई नहीं, तो आपने इनकम वाली ही अकाउंटिंग पॉलिसी लिख दी, विच इज नॉट करेक्ट। सो व्हेनेवर वी आर राइटिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज विद रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर आइटम, तो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी के जितने भी लेम्स होते हैं, है ना, जितने भी भाग होते हैं, वो सब हमें उसमें लिखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आपने जैसा आपके यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, आप तो ये कह रहे हो कि साहब मेरे यहाँ तो इनकम वाली होती है, तो मैं तो सारी इनकम ही लेके जाता हूँ। तो आप क्या लिखोगे कि ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स आर अकाउंटेड फॉर एज इनकम इन सच एंड सच मैनर, व्हाटएवर इज द केस। तो यूजर क्या देखेगा? यूजर उसको पढ़ेगा, हु आर द यूजर्स?
स्टेक होल्डर्स कौन है? तो ये सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो ये सोचेंगे अच्छा ये तो किसी भी तरह की ग्रांट आती है उसको इनकम में लेके जाते हैं, तो दे विल नॉट बी एबल टू क्लासिफाई तो यूजर से पर्सपेक्टिव से आपको देखना पड़ेगा, आपको आपकी केवल इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से, कंपनी के पर्सपेक्टिव से कि साहब हमने तो रिपोर्ट कर दी ना, ऐसा नहीं होता। तो यू नीड टू डिस्क्लोज द नेचर ऑफ द ग्रांट आल्सो इन योर अकाउंट। नेक्स्ट, Change in ownership interest in an associate or joint venture. Observation: it was observed that in some cases there is a change in ownership interest in an associate, but the entity didn't transfer the equivalent profit from OCI to profit and loss account as required by Ind AS 28. ये क्या है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। Sir, other comprehensive income is like reserves के जैसा ही होता है एक पार्ट, जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ गेन लॉस है और मतलब सर्टेन आइटम्स। देखो इन्होंने क्या किया, ये जो कहना चाह रहे हैं बेसिकली जब हमारा कोई इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर है और उसका जो वैल्यू है वो हम फेयर वैल्यू पे कर रहे हैं उस पर्टिकुलर आइटम को, है ना, बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दी स्टैंडर्ड। तो ये कह रहे हैं कि आप जब कभी भी उसको वैल्यू कर रहे हो तो उसका जो दैट शुड गो टू दी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, है ना, एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज होता है एज में केवल प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन इंड एस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस हैज टू पोर्शन, स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम हैज टू पोर्शन, वन इज प्रॉफिट एंड लॉस, अदर इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पार्क कर देते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, so then we park it as other comprehensive income। तो इन्होंने कहा कि साहब देखिए मेरा जो प्रॉफिट है, ऑनरशिप इंटरेस्ट है, वो कितना था एज ए यू नो एसोसिएट और जॉइंट वेंचर में, वो मेरा सपोज 35% था उसको, और मैंने उस 35% को कुछ किया और उसको मैं 30% पे लेके आ गया, 5% मैंने डाइल्यूट किया। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर 5% आपने अपना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या जो इंटरेस्ट इन दैट एंटिटी है उसको डाइल्यूट किया है, तो उससे जितना रिलेटेड प्रोपोर्शनेट आइटम अमाउंट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पड़ा है, दैट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, वो प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा बन जाएगा। जितना फेयर वैल्यू इनकम आपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव में 5% से रिलेटेड रिकॉग्नाइज किया हुआ है, दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। सो दैट वाज नॉट मेंशन, जो कि मेंशन होना चाहिए। अब ये छोटी छोटी बातें हैं जो जब आप अपना ऑडिट करते हो, अकाउंटिंग देखते हो, फाइनेंशियल हिसाब से आप चीजों को देखते हो, तो देन यू नीड टू कंसीडर दिस, है ना। ऑफिस का चेकलिस्ट आपको ये बता सकता है कि क्या क्या होना चाहिए, ये नहीं बता सकता कि ट्रांजैक्शन वहां क्या हुआ है। वहां के ट्रांजैक्शन को देख के आपको अल्टीमेटली अकाउंटिंग करनी होगी। That's it from my side. Thank you. तो तेरी साइड से नहीं है तो आधा तो मेरी साइड से था, है? थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना चाहिए हमारी ऑडियंस जो है उसके हिसाब से। और मैं तो कह रहा हूँ ऑडियंस क्यों, आप खुद ही ऐसा एक्सप्लेन करो कि यू ऑल्सो बिकम यू नो अट्रैक्टिव, एवरीबडी ट्राई टू लिसन। अब ये सबके ऊपर से जा रहा था, therefore I have to pitch. Next, सारे ऑब्जर्वेशंस कवर कर लिए क्या अपने तीनों ने, या कुछ रह गए?
सर जो मतलब इम्पोर्टेंट थे वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कैसे अपन ने पहचाने मतलब कुछ कॉमन टॉपिक हैं? कुछ जो कॉमन आ रहे थे reputation। मतलब पहले तो इंस्टीट्यूट ने क्या इम्पोर्टेंट है वो लिखे, फिर आपने कहा कि इसमें से ये इम्पोर्टेंट है। इंस्टीट्यूट जो है वो कितने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को निकाल करके जो कॉमनली फाउंड एरर है ना, इम्पोर्टेंट एरर ही निकाले ना उन्होंने। अब आपने इम्पोर्टेंट में से भी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट निकाले, इसलिए आपकी स्लाइड्स 19 ही बनी। So we should try to cover the entire book whenever we are discussing. Anyway, चलिए। EPS क्या होता है? EPS अर्निंग पर शेयर। पहले EPS को एक्सप्लेन करो, फिर अपनी एरर्स को एक्सप्लेन करो। So earning per share, as we all know, there are two types of earning per share: basic and diluted earning per share. So जो EPS होता है तो उसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं हम लोग को वो भी कैलकुलेट करने रहते हैं और अर्निंग्स फॉर द पीरियड भी कैलकुलेट करनी होती है। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं बाय द एनी काइंड ऑफ चेंज इन द नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द करंट ईयर। नंबर ऑफ शेयर्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज हो सकते हैं। नाउ अब वो रीजंस क्या होगी कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो या तो कोई बोनस शेयर्स हमने इशू कर दिए या फिर कोई कैपिटलाइजेशन क्या यहाँ पे रिवर्स शेयर स्प्लिट हो गई तो जिससे कि नंबर ऑफ शेयर्स में डिक्रीज आ गया। So here the problem was that due to any change in the number of shares, the effect was given to the, but no retrospective effect was given to the prior period only. So what we are supposed to do here is that कि हम लोग को जो number of shares में changes करते हैं तो वो retrospectively prior period की earnings में भी calculate करके दिखाना पड़ेगा और वो basic और diluted दोनों में करके show करना पड़ेगा। Or if these changes occur after the reporting period but before the financial statements are approved for issue, then the per share calculations for those and any prior period financial statements presented shall be based on the new number of shares. तो जो number of shares है जो कि alter हो गए अब तो वो उस according change होने चाहिए। क्या मतलब हुआ इसमें? क्या समझ में आया? सर अगर करंट ईयर में अगर नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहे तो इफेक्ट क्या होता है? यह है इसका मतलब, ये जो कह रहा है। सर ऐसा होता है कि जब हम बेसिक निकालते हैं तो हम करंट ईयर के जो होते हैं ना वापस उसी को जाओ। देखते हैं तो उसमें हाँ तो सर जैसे अगर इसी साल हमने सर अगर कोई ज्यादा बोनस शेयर इशू कर दी है या सर हमने बायबैक कर दिया तो उससे सर हम जब अगर पुरानी पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं तो सर हमें ऐसा आइडिया अच्छे से नहीं मिल पाता कि शायद तक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ईपीएस या डिक्रीज। सर इसलिए फिर अपन डाइल्यूटेड निकालते हैं ताकि हम पिछले सालों को भी थोड़ा सही कर सके ताकि हम कंपैरिजन अच्छे से कर पाए। क्या भाई? डाइल्यूटेड अलग होता है। सर जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं हम लोग रीस्टेटेड निकालते हैं कि अगर कोई भी चेंज हो गया ये जैसे लाइन क्या कर रही है? अगर जो चेंज आ रहा है नंबर ऑफ शेयर्स में वो आ रहा है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी, तो फिर जो चेंज है वो हम लोग करंट ईयर में तो करेंगे और उसका इन द प्रायर पीरियड वर्किंग सेक्टर। तो ये क्या आप जो कह रहे हो ना उसके आगे जा रहे हैं क्या? हाँ रिपोर्टिंग पीरियड। ये जो समझा रहे हैं वो क्या समझा रहे हैं कि इस साल में चेंज हुआ है तो पिछले साल में भी चेंज करेंगे। ये जो लाइन है वो क्या कह रही है? आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, है ना। और ये केवल कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की बात हो रही है, यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है। बोनस इश्यू करने से पैसा आता है क्या? नहीं आता ना। हाँ तो पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड अगर आपके बोनस शेयर का कैलकुलेशन बोनस शेयर की वजह से नंबर चेंज हुआ है तो आपको उस साल का भी करना है, ये कह रहे हैं, और पिछले साल का भी करना है। वो जो समझा रहे थे क्या समझा रहे थे? ये समझा रहे थे तुम? आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड की बात करी क्या आपने? नहीं करी ना।
वहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ जो बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं? आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ऐसा है लॉ में लिखा हुआ है ऐसा? एक बार बताना मुझे, आगे चलो। EPS for continuing and discontinued operation. So in some of the cases it was noted that the EPS for continuing as well as discontinued operation were disclosed under the same head. तो मतलब कि here the problem was that कि हम लोग को उसको separately करना होता है, same head के अंदर नहीं करना होता है, as per the requirement of the Schedule 3 of the Companies Act 2013. Dividend on cumulative preference shares. So in certain cases, it was observed that the dividend on cumulative preference shares were not adjusted while determining earnings for the period. For a particular period, what we have to do is that we have to adjust our earnings with dividend on cumulative preference shares, if any. Foreign currency transactions, monetary assets and liabilities observation. As per para 23 of India's 21, foreign currency monetary items shall be translated using the closing rate. The requirement of translation as per India's 21 with regards to monetary assets and liabilities and not with respect to current assets. It means at the end of the reporting period, what we do is that we convert all the foreign currency transactions at the closing rate. तो ये जो conversion है ये हम लोग इससे कर रहे हैं because of the monetary nature of items, not because of the current assets and current liabilities. Next is segment reporting. So that where there was only one segment of reportable. So it was noted that where only there was reportable, the companies were not following the proper disclosure requirements as per Schedule 3 of the Companies Act 2013. So what we are supposed to do here is that the companies are supposed to disclose the single reportable segment as well, and further it is to be disclosed under the heading of notes to account instead of disclosing employee share-based payments disclosure. So the disclosures that are considered to be necessary with regards to employee share-based payments are as follows. The very first thing that we can disclose is with regards to the stock options exercised is their weighted average share price. Next one is their exercise price, and the share options that are outstanding. We can disclose weighted average remaining contractual life with regards to them. Moreover, we have to also ascertain the effect of employee share-based plans on the entity's profit or loss for the period and on its financial position. Share application money received pending allotment. So, in some of the cases, it was noted that where the share application money was obtained, but whose allotment was pending, the same amount was reflected in the liabilities. But what extra we can do here is that we have to represent that amount under the head of statement of changes in equity. There is a separate column and we have to represent that amount there as well. Next is the statement of changes in equity. It was noted that the note on equity share capital and note on other equity have been shown separately instead of disclosing them as subhead under statement of changes in equity. तो जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है उसके अंदर हमको बैलेंस शीट के ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट वी हैव टू डिस्क्लोज द इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी सेपरेटली अंडर द हेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. So the next is equity share capital disclosures. So here the problem was that most of the companies were failing to reconcile the number of shares outstanding at the beginning of the period and at the end of the period. So what we have to do here is that we have to prepare a reconciliation of the number of shares outstanding. And also we have to disclose the rights, preferences, restrictions attaching to each class of shares, including restrictions on the distribution of dividends and the repayment of capital. Borrowings. So it was noted in some of the cases that where the borrowings were obtained from the banks or other financial institutions on the basis of current assets, then the proper disclosure requirements were not met as per the Companies Act 2013. So what we can do here is that
the quarterly results that we have filed with the bank or the financial institutions are to be reconciled with our books of accounts. And if there is any difference arising, then the reason for such discrepancy also is to be disclosed. And moreover, the purpose of borrowings for which we have obtained them should also be considered, like कि हम लोग divert तो नहीं कर रहे अपने purpose से, and if we are diverting, then the reason is to be disclosed for such diversion. ये जो है बोरोइंग्स का समझ में आया आपको क्या कह रही है? बताएगा? हाँ बताओ. क्योंकि जो करंट एसेट्स अपनी होती है उनकी क्वार्टरली क्लोज होती है उनको रिकंसाइल कर लेती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ में कि वो मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी अराइज होती है तो अपन को वो भी डिस्क्लोज कर देना चाहिए. लेकिन क्वार्टरली अब कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है. लिस्टेड कंपनी तो क्वार्टरली बनाती है. अनलिस्टेड बनाती है क्या? अनलिस्टेड नहीं बनाती है. तो नाउ देयर इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस कि हम आप क्लाइंट से मांगो कि साहब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से कितना करंट एसेट्स मींस इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स और भी जो दूसरे करंट एसेट्स हैं, तो कैश बैलेंस, ये सारे टोटल कितना एसेट आपने बैंक को रिपोर्ट किया एज ऑन क्वार्टरली फॉर दैट पर्टिकुलर क्वार्टरली डेट, मे बी जून, मे बी सितंबर, और कितना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहा है. तो इसका मतलब कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी रेगुलरली क्लोज करने होते हैं, जब भी तो वो कर पाएगी. एंड इवन दो इट इज नॉट लिस्टेड, so you need to reconcile those amounts with the books of accounts which are being given to whom? Banks. और अगर reconcile नहीं होते हैं और सपोज ज्यादा अमाउंट आ रहा है तो क्या होगा? स्टॉक 1 करोड़ का ईयर, तो क्या आना चाहिए आपके मन में? और अब मान लीजिए कि आपने एज एन ऑडिटर इसको वेरीफाई नहीं किया, बोरोइंग्स को आपने वेरीफाई नहीं किया और चलने दिया कि यार एक डिस्क्लोजर नहीं देने से क्या फर्क पड़ता है, और कल को ये निकल के आ गया कि साहब डिस्क्लोजर देते तो ये पता चलता और इन्होंने जानबूझ के इसको छुपाया है, और दिखा रखे हैं बैंक को, जबकि बुक्स में 1 करोड़ ही है. क्लाइंट वुड ऑलवेज ट्राई टू हाइड कि यहाँ डिस्क्लोजर मत दो, लेकिन जब आप पूछोगे तो चीजें नजर आएगी सामने. तो ये सरकार का एक तरीका है टू ब्रिंग द फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड. तो उन्होंने क्या करा, पहले तो ये बोला कि कंपनी रिपोर्ट करे इस चीज को, और फिर ऑडिटर्स के ऊपर पे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि आपको इस पे कमेंट करना है. तो जब हम कारों पढ़ेंगे ना, तो कारों में इसके ऊपर कमेंट करने की भी बात आई हुई है ना? आप लोगों ने पढ़ा था ना कारों? यस, उसके ऊपर इस पे कमेंट करने की भी बात आई है. सो वंस आपका ऑडिट आसान हो गया ना, कई सारी चीजें जो क्लाइंट मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है वो नहीं हो पाएगी. So our next topic is loan to subsidiaries. Section 4 of the Companies Act 2013. The company shall disclose to the members in the financial statement the full particulars of the loans given, investment made or guarantee given, or security provided, and the purpose for which the loan or the guarantee or security is proposed to be utilized by the recipient. तो अगर कंपनी ने कोई भी लोन दिया है अपनी सब्सिडी को, या कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर कोई भी गारंटी दी है, तो कंपनी को वो रीजन भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा फॉर व्हिच सच लोन वाज गिवन टू द सब्सिडी, एंड आल्सो ये पर्पस बताना पड़ेगा कि वो उसी चीज के लिए यूटिलाइज हो रहा है या नहीं. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्लोजर्स फॉर लोन्स और एडवांसेस ग्रांटेड टू promoters, directors and the related parties. In case where the company grants any loan to its promoters, directors, KMPs or related parties, so the disclosures that are considered to be necessary are the amount of loan or advance that the company has granted to its promoters is to be disclosed
Then secondly, also the percentage of the amount that it has lended to the total loan amount is to be disclosed. So as per amendments made in Schedule 3 of the company, it requires company to give disclosures where loans or advances in the nature of loans are granted to promoters, directors, KMPs, and the related parties, either severally or jointly with any other person, that are repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment. ये Next, सारे जो डिस्क्लोजर है ना, ये अभी रिसेंटली जो ये डील कर रही है, दे आर दो डिस्क्लोजर्स जो कंपनीज एक्ट के अंदर रिसेंटली 2022 वाले साल में अमेंडमेंट्स आए थे, एंड ऑल कंपनीज वर रिक्वायर्ड टू गिव दोज डिस्क्लोजर्स अकॉर्डिंग टू दीज एडिशनल रेगुलेटरी डिस्क्लोजर्स, जो कि कंपनीज ने, काफी कंपनीज ने नहीं दिए. तो इंस्टीट्यूट हैज कम आउट विद ए स्टडी for 2021-22 financials and said that these disclosures are still not happening. क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंपनीज भी जो है, if they are not updated, so they basically do not give the additional disclosures जो कि नए आए हुए हैं, पुरानी ही को दिए बैलेंस शीट की. So therefore such errors were found. so our next topic is cryptocurrency or virtual currency. So in some of the cases, it was noted that where the company was trading in the cryptocurrency or any kind of virtual currency, so the proper disclosures were not made as per the Schedule 3 of the Companies Act 2013. So the disclosures here can be as follows. The profit or loss on the transactions involving cryptocurrency or virtual currency can be disclosed. Then secondly, amount of currency held as at the reporting date is to be disclosed. And also if we have obtained any loan or advance for the purpose of trading in such currencies, तो वो भी हमें disclose करना mandatory रहता है. क्या होता है क्रिप्टो करेंसी? डील किया किसी ने क्रिप्टो में? नहीं किया है? किया तूने? गवा दिए पैसे हैं? वापस निकाल लिए? क्या टैक्स के बारे में क्या सुना आपने क्रिप्टो में? कौन से सेक्शन में? सेक्शन याद नहीं है. 1-to-1 set off allowed नहीं है. Yes. So though the government has discouraged the cryptocurrency transactions by introducing separate tax rate on that and also not allowing the losses to be set off with other profits. तो फिर भी कुछ कंपनीज अगर क्रिप्टो में डील करती है तो then they need to give these disclosures. है ना? क्या on transactions involving cryptocurrency, amount of currency held at the reporting date, and deposits or advances from any person for the purpose of trading or investing in crypto or this. मतलब किसी और को पैसा दिया आपने और वो आपके बिहाफ पे क्रिप्टो में पैसा लगा रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, एडवांस दोगे तो एडवांस से पता नहीं चलेगा कि ये क्रिप्टो के लिए दिया है या नहीं दिया है. सो यू नीड टू मेक प्रॉपर इंक्वायरी. तो जितने भी एडवांसेस होते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये एडवांस किसके लिए दिया हुआ है. नहीं तो पता चला कि एक मेजर एडवांस इन्होंने क्रिप्टो के लिए दिया रखा है और आपने उसको केवल एक एडवांस दिखा रखा है. और इन सब के प्रोसेस क्या है? बैलेंस कंफर्मेशंस. पता कैसे करोगे? किसी को 1 करोड़ रुपया दे रखा है, उसको दिया हुआ है, पता कैसे करोगे? एक्सटर्नल कंफर्मेशन, है ना? कोई एग्रीमेंट तो नहीं है उनका आपस में किसी तरीके का. सो लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू यूज अवर professor escapism to find out answer to all these queries, all for all these disclosures. So next topic is shareholding pattern of promoters. So
for disclosing the shareholding pattern of promoters, and it can be disclosed in this format. And this format shows the percentage of the total shares held by the promoters and also the percentage change during the year in the holding of the promoters. कौन होते हैं promoters? आप जब अपना एनुअल रिटर्न फाइल करते हो ना, उसमें लिखते हो कि हु आर द प्रोमोटर्स. वो प्रोमोटर्स आपको यहाँ पे मान के और उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है ये डिस्क्लोज करना है, और उसने कितना परसेंटेज होल्ड किया हुआ है ये जरूरी नहीं है. इट मे बी इवन लेस देन 5%. शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर में शेयर होल्डिंग से रिलेटेड दो डिस्क्लोजर है. One is those who are holding more than 5%, and other is shares held by promoters. तो दोनों टेबल में कुछ नाम तो कॉमन हो सकते हैं. जो प्रोमोटर है और 5% से ज्यादा ले रखा है और कम ले रखा है, तो ज्यादा वाला तो ऊपर वाली टेबल में भी आएगा और नीचे वाली टेबल में भी आएगा उसका. जिसका कम है उसका भी नीचे वाली टेबल में आएगा. लेकिन जिसके 5% से ज्यादा है और शेयर होल्डिंग वो दे आर नॉट प्रमोटर्स, तो वो केवल ऊपर वाली टेबल में आएंगे. सो समटाइम हम क्या करते हैं, अच्छा ये शेयर होल्डिंग का डिस्क्लोजर दे दिया ना, तो वी फॉरगेट वन ऑफ द Excuse me, sir. So the mic is mute.
Sir, the mic is mute. We're not able to hear anything. Pallavi's mic is mute. जब तक इससे confirm whether now it is audible. Now it is audible. So trade receivables aging schedule. Can someone confirm? Yes, sir. Now we are audible. Yes, sir. Hey, you are audible. We are audible or not? Okay, continue. Sir, we And can he's hear answering. you as well. Thank you. Thank you. The aging schedule of trade receivables will be provided in the form of less than 6 months, 6 months to 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years, and more than 3 years. And it can be further bifurcated into undisputed trade receivables and disputed trade receivables. And the classes can be as follows: undisputed trade receivables considered doubtful, which have significant increase in credit risk, credit impaired, or disputed trade receivables considered good, which have significant increase in credit risk or credit impaired. Now, in the same way, the aging schedule is to be presented for trade payables as well. And trade payables can be further bifurcated into MSME and others, and also the disputed dues from MSME and disputed dues with others. Relationship with struck-off companies. So it was noted in some of the cases that the companies were entering into the transactions with the struck-off companies, and the proper disclosures were not made as per Schedule 3 of क्या the होती है company. stock of companies? As per section 248 of the Companies Act 2013, it provides registrar the power to struck off the name of the company from the register of companies, and be done due to several reasons. So the disclosures that are considered necessary here are as follows: the name of the struck-off companies to be disclosed if the company is entering into any transaction with the struck-off companies. Further, the nature of transactions with struck-off companies also to be disclosed, and the balance outstanding and the relationship, if any, with the struck-off companies to be disclosed. Next one is Investor Education and Protection Fund. So if there is any money transferred to the unpaid dividend account of a company which remains unpaid or unclaimed for a period of such transfer, then it shall be transferred by the company to the IEPF fund along with any interest that is accrued. क्या होता है IEPF? पढ़ा हुआ है मतलब इन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ दिखता है. ये लोग कोई नहीं बोल रहे थे. क्यों पता है? हैं? Hesitation. आप लोग क्या है कि एकदम यंग हो ना, ये थोड़े ये 6 महीने बूढ़े हो गए है ना, कोई साल भर हो गया, कोई 1.5 साल हो गया, तो उसका हेजिटेशन जो है ना, वो जो यंग रहता है ना बच्चा, उठता रहता है ना,
नई चीज देखता है तो है ना, ये क्या है ऐसे आप लोगों का बिहेवियर ही है, ये लोगों का क्या है विच इज रॉन्ग ऑन देयर पार्ट ना चाहिए कि हम थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखें, आप लोगों को भी ये समझना चाहिए है, नहीं तो चीजें फेड हो जाती है। Continue. So the next Pallavi, your mic is mute. Please unmute. company has carried out any valuation in regards to any of the securities, then it shall be valued by a person having such qualification as per the Companies Act 2013, and that valuer shall be a registered valuer as per the Schedule C of the Companies Act 2013. Next topic is the Code on Social Security 2020. So it was observed that the organizations failed to give the disclosure with respect to the recent pronouncements made in Code on Social Security 2020. Although it's not mandatory, but it's considered to be a good practice to disclose such practices. And the objective of such act is to amend and consolidate the existing labor laws so that there can be the upliftment in the working conditions of the unorganized workers as well. So till now we have discussed about the disclosures that were considered to be necessary with respect to the financial information. So now we'll be talking about the disclosures regarding some non-financial information. So first one is statement on vision and mission. So a mission statement basically defines the company objectives and its approach to reaching those objectives, whereas a vision statement basically provides the future position of the company, and it provides the stakeholders about the company's purposes, goals, and values, which adds value and considered a good reporting practice. But it is not actually required by any law, but basic practice to report vision and mission statement in the financial statement itself. Otherwise, annual report or director's reports में तो ये लिखता ही है. Next topic is strategic objectives. So the objective of the organization should be aligned with the organization's vision and mission. While presenting the strategic objectives, following should also be included, like the focus areas that define the strategic objective. Next topic is organization and group structure. So organization structure is basically structure which shows the management in the organization, whereas the group structure is different from the organization structure in the way that it shows the relationship of the entity with its group entities. So as we all know that shareholders cannot participate into the day-to-day activities of the organization. So what
Sir, the mic is muted, so you are not audible. So it was noted that the companies were revealing the number of audit committee meetings that it has conducted, but however, they were lacking to reveal the date of the audit committee meetings. Actually, Pallavi is testing whether all are hearing or not. The following disclosures are required for audit committee to be made. Brief description of the terms of reference can be given. Composition, name of members and chairperson can also be given, and meetings in attendance during the year can also be disclosed. Next topic is corporate social. So as we all know that as per section 135 of the Companies Act 2013, the minimum amount that we have to spend under CSR is the average of the 2% of the average net profits of the preceding 3 financial years. So the disclosures that are to be made here are as follows. Firstly, we have to disclose the amount required to be spent by the company during the year. Secondly, the amount of expenditure incurred. And third, we can disclose this shortfall at the end of the year, if any. And fourth, This disclosure in financial statements, not in board में भी आता होगा, but financial statement. Further, if we have created any provision with respect to any liability incurred, then if there is any movement in such provision during the current year, then that movement is also to be disclosed separately. So further, it will be continued by Shreya. तो अभी तक अपन ने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर लिया है. अब मैं डिस्कस करूंगी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री. तो विद सबसे compliance of RBI circular write-off. It was observed that banks have write off the loan. However, there is no disclosure whether the same is certified by statutory auditors. ऐसा बैंक लोन्स तो राइट ऑफ कर दी है, बट ऐसा कोई डिस्क्लोजर नहीं था कि सेम स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफाई कर रहा है कि नहीं. तो इट रेज्ड अ कंसर्न अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी. इससे ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का इशू रेज हो रहा था. तो रिजल्ट मतलब सॉल्यूशन टू दिस इज as per Annexure 3, disclosure in financial statement, notes to accounts of financial statements, presentation and disclosure. Technical or prudential write-off is the amount of non-performing loans which are outstanding in the books of the branches but have been written off fully or partially at head office level. तो ये राइट ऑफ मतलब ये टेक्निकल प्रूडेंशियल राइट ऑफ क्या होते हैं, जो कि ब्रांच पे तो हैं बट हेड ऑफिस ने राइट ऑफ कर दिए हैं. तो इस स्टेज को स्टैट्यूटरी ऑडिटर को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये राइट ऑफ हो चुके हैं कि नहीं हुए. Next is compliance of RBI circular liquidity coverage ratio. It was noted that bank has not disclosed the number of data points used in calculating average figures of liquidity coverage ratio. तो कवरेज रेशियो तो शो कर रहा था, बट जो डेटा यूज हुआ है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को कैलकुलेट करने में वो नहीं शो कर रहा था. What is liquidity coverage ratio? Liquidity coverage ratio states that at minimum and ongoing basis, the bank must maintain an adequate level of unencumbered, high-quality liquidity assets that can be converted into cash to meet its liquidity needs. Liquidity need करने के लिए अपने पास कितने लिक्विड एसेट्स हैं उसका ये एक तरीके का रेशियो है. So, as per Annexure 3, disclosure notes to account of RBI's master direction on financial statement, presentation and disclosure
regarding liquidity coverage ratio, data must be presented as simple average of daily observation over the previous quarter. Banks must publish the number of data points used in calculating average figures in template. तो बैंक को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, मतलब एवरेज नहीं कर सकती है कि कितना मतलब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो किस डेटा से निकाला गया है. Investments by banking company. It was observed that the banking company have hold the shares of a company exceeding the limit as prescribed in Banking Regulation Act. अब ऐसा है ये बार-बार ये फाइल अब आ रही है सर. So what is the limit of holding the shares of a company? No banking company shall hold shares in any company, whether it's pledging, mortgagee, or absolute owner of an amount exceeding 30% of the paid-up share capital of that company, or 30% of its own paid-up share capital and reserves, whichever is less. तो लिमिट क्या है? जिस भी कंपनी में अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 30% या फिर जो अपनी अपनी कंपनी मतलब बैंक है उसका पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स का 30% जो भी लेस है वो अपनी लिमिट रहेगी कि इसके एक्सेस में अपन नहीं कर सकते. एक्सीडिंग दिस लिमिट में अट्रैक्ट स्क्रूटनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स स्टेक होल्डर्स इम्पैक्टिंग बैंक्स रेपुटेशन. अगर मतलब दिस लिमिट में attract the liability or penalty to bank, provided that any banking company which is on the date of the commencement of this act holding any shares in contravention of provision of this subsection shall not be liable to any penalty. ये सेक्शन आने से पहले अगर किसी कंपनी ने 30% से एक्सेस तो वो कोई भी लाइबिलिटी पेनल्टी नहीं लाइबल होगी. नेक्स्ट इज implementation of Ind AS is deferred on banking industry. It was observed that RBI required all banks to submit pro forma Ind AS financial statements, but no specific disclosure regarding the preparedness of Ind AS implementation was provided. As such, till date तो Ind AS implement नहीं हुआ है बैंकिंग सेक्टर पे, मतलब अभी भी डेफर स्टेट में है Ind AS implementation का. बट RBI pro forma Ind AS financial statement चाहती है बैंक से ताकि मतलब पता चले कि बैंक में प्रिपेयर है कि नहीं Ind AS के लिए. Therefore, RBI has deferred the implementation of Ind AS till further notice. However, RBI requires all banks to submit pro forma Ind AS financial statement every half yearly. A statement in regard to its preparation and submission should have been provided. A statement इस regard में RBI को provide करने पड़ेंगे हर बैंक को. Utilization of floating provision. It was observed at some cases that floating provision not utilized fully. What is floating provision? Floating provision ऐसा provision होता है
शेयर इशू एक्सपेंसेस। अब इसमें आरबीआई तो कहती है कि शेयर प्रीमियम अकाउंट अपन शेयर हैं? तो आज ही एक बार वापस शेयर कर ले इसको। बढ़िया। आ रही है। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर प्रीमियम, अब आरबीआई तो कहती है कि शेयर प्रीमियम अकाउंट से शेयर इशू एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो अपन राइट ऑफ कर सकते हैं, बट डेट इंस्ट्रूमेंट के एक्सपेंसेस राइट ऑफ नहीं कर सकते। बट कंपनीज एक कहती है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम डेट एज वेल एज शेयर्स के लिए भी राइट ऑफ कर सकते हैं अपन। पर बैंक के ऊपर तो आरबीआई प्रिवेल करेगा, देयरफॉर अपन शेयर प्रीमियम अकाउंट से डेट के एक्सपेंसेस नहीं कर सकते हैं राइट ऑफ। नहीं आ रही ना वॉइस अभी भी? ये तुम्हारा प्रेजेंटेशन दूसरा ही आने लग गया कुछ। स्टॉप शेयरिंग करके और आप स्क्रीन शेयरिंग कर दो। अभी आ रहा, सही आ रहा है ये? आप स्क्रीन शेयर पे चले जाओ। हाँ अभी आ रहा है। Next is provision pertaining to fraud accounts. It was observed in some cases that provision of fraud cases is not in accordance with RBI guidelines. अब जो fraud cases हो जाते हैं बैंक के साथ, उसके लिए RBI की guideline तो ये है कि on immediate effect के साथ अपने को provision बना लेना चाहिए. However, to smoothen the effect of such provisioning on quarterly profit and loss, bank have the option to make the provision over a period not exceeding 4 quarters commencing from the quarter in which the fraud has been detected. But बैंक को मतलब एक तरीके से छूट मिल रखी है कि वो 4 क्वार्टर तक प्रोविजन बना सकते हैं. Next is Basel III framework on liquidity standards and NSFR final guidelines. It was observed that in some cases bank have not complied with NSFR guidelines which require bank to have net stable funding ratio at least 100% on ongoing basis. What is सबसे पहले तो NSFR क्या है, मतलब ये क्या रेशियो है? अवेलेबल स्टेबल फंडिंग अपॉन रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग. अवेलेबल स्टेबल फंडिंग क्या है? जो भी पेमेंट अकाउंट्स है, सेविंग अकाउंट्स है, डेट और इक्विटी बैंक के पास अवेलेबल है, अपॉन रिक्वायर्ड जो भी वो लोन दे रही है या फिर उनके लिए कोई भी एसेट्स है, वो मतलब एक तरीके से लाइबिलिटी अपॉन एसेट्स हो गया इन शॉर्ट नोट कि ये 100% से ज्यादा होना चाहिए या फिर 100% के बराबर होना चाहिए. Next is observation relating to insurance sector. अब banking sector तो complete हुआ. Next is insurance sector के बारे में कुछ observation जो उनके पर बात करेंगे. Format prescribed by IRDA. It was noted in some cases that form APL and ABS on
P&L and balance sheet are not mentioned. सबसे पहले फॉर्म ए तो होता है लाइफ इंश्योरेंस के लिए और फॉर्म बी होता है जनरल इंश्योरेंस के लिए. तो फॉर्म ए P&L का तो मैं आपको शो करती हूँ स्क्रीन पे. ये P&L का फॉर्म ए है. इसके अंदर बेसिकली हर एक इंश्योरेंस कंपनी को फॉर्म ए PL लिखना चाहिए और नेम ऑफ द इंश्योरर और रजिस्टर नंबर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद IRDB लिखना चाहिए. तो ये ऑब्जर्वेशन थी इंश्योरेंस कंपनी नहीं लिखती थी. सिमिलरली बैलेंस शीट के लिए भी यही ऑब्जर्वेशन थी कि फॉर्म ए बैलेंस शीट और ये इंश्योरेंस रजिस्टर ये सब लिखना चाहिए. नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी डिस्क्लोजर ऑफ एनकम्बरेंसेस. अच्छा, इज इट देयर कि फॉर्म ए एंड फॉर्म ए BS लिखना चाहिए? हाँ, As and when we are going for signing any it should be mentioned. एक बार दीपक सर को बुलाना. You continue. Insurance company disclosures of encumbrances. It has been observed that some companies have not disclosed the encumbrances to assets of the company by way of notes to the balance sheet. What is encumbrances? Encumbrances are mortgage or other claim on. ये there are some IRDA preparation of financial statement and auditors reports of insurance companies. तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जब अपन बैलेंस शीट बना रहे हैं तो फॉर्म ए एंड फॉर्म बी भी लिखना चाहिए हमें. Form A for life insurance company and Form B for general insurance. Form A and Form B is the template name. हाँ. बैलेंस शीट और P&L का जो केस है उसका नाम है ये. हाँ. तो इन्होंने जो रिसर्च कमेटी ने ये लिखा है कि फॉर्म ए का ये भी लिखा होगा कि फॉर्म ए. यस, ये रिसर्च कमेटी ने लिखा है. We should improve. हाँ, we should ठीक है, अपन नहीं लिख रहे. अपन तो नहीं लिख रहे. Form B नहीं लिख रहे. अपन नहीं, कंपनी नहीं लिख रही है. अपन तो रिपोर्ट कर. हाँ, तो ये मैंने कहा कि ये improve. आई शुड हाईलाइट क्वालिटी कंट्रोल को बोलते हैं. ये लाइफ इंश्योरेंस का होगा कि General insurance. मैं देखता हूँ दूसरी कंपनी को. हाँ, एक बार दूसरों को भी देखें. Insurance companies disclosure of encumbrances. It has been observed that some companies have not disclosed the encumbrances to assets of the company by way of notes to the balance sheet. Encumbrances means a mortgage or other claim on property or assets. जो भी मतलब इंश्योरेंस कंपनी को एसेट्स का ये दिखाना पड़ेगा कि कोई भी encumbrances है उस एसेट्स के रिलेटेड, तो वो उनको नोट्स के थ्रू शो करना पड़ेगा. In case such charges does not exist, the company should mention that there exists no charges on assets of company in and outside India. अगर कोई ऐसा है नहीं तो मतलब लिखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ चार्जेस है नहीं हमारे एसेट्स के. Next, insurer prohibited for investments of funds outside India. It was noticed that no declaration is made by insurance company in this regard. तो इंश्योरेंस कंपनी इंडिया के आउटसाइड इन्वेस्ट नहीं कर सकती, either directly or indirectly. तो एक डिक्लेरेशन इनको देना है कि ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने नहीं किया. As per Section 27E of Insurance Act 1938, prohibition for investments of funds outside India. No insurer shall directly or indirectly invest outside India the funds of policy holders. Next is accounting and disclosures of unclaimed amount of policies holder. It was noticed that required disclosure are not given with regard to unclaimed amount of policy holders. अब कुछ अमाउंट जो अनक्लेम रह जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, उनके लिए भी मतलब स्पेसिफिक single segregated fund to maintain all unclaimed amounts, and the sum of such amounts of such funds shall be invested in money market instruments, liquid mutual funds, and or fixed deposits of scheduled banks or such other instruments as may be permitted by authority. इसका एक segregated fund बनता है unclaimed amount का. All insurers shall disclose the amount representing the unclaimed amount as a separate line item in the specified notes or schedules to balance sheet.
और इसके लिए सेपरेट लाइन आइटम बैलेंस शीट या और नोट्स के थ्रू शो होएगा. The age-wise analysis of unclaimed amount shall also be disclosed in notes to account as per the specified format and shall form part of the annual report of all insurers. और इसका age-wise analysis annual report का part बनना होना चाहिए. आप इस प्रेजेंटेशन को वरेनिया से शेयर करना जो इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है. So they will check whether these things are there in your form. क्वेश्चन है इससे रिलेटेड इससे- रिस्क भी अपन को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी क्या? अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले अमाउंट को. इसके रिलेटेड रिस्क तो मतलब अपन लिक्विड मार्केट में कर रहे हैं हाँ तो लिक्विड मार्केट में भी लॉस हो सकता है. इनके लिए रिस्क के डिस्क्लोजर अगर है तो करने पड़ेंगे. फिर If there are एक रिस्क के ऊपर डिस्क्लोजर तो है मैनेजमेंट रिपोर्ट में डिस्कस करते हैं. All insurers shall disclose the income credited during the year on unclaimed amount in the notes to account in financial statement. सारे मतलब कुछ भी अगर इनकम हुई है इनकम unclaimed amount पे तो वो डिस्क्लोज होना चाहिए. Next is risk management disclosure. The risk management disclosure given were not adequate as per the requirement of IRDA. IRDA Regulation 2002 described the manner of preparation of financial statement. IRDA financial statement
क्या हुआ? So we are just coming back in 1 minute. Hold on. Taking a break. Now we are admitted. Continue. Disclosures about source and uses of funds. It was observed that NPOs have not given the disclosure of full information about end use of resources, including an analysis of percentage of funds spent on organization infrastructure, manpower, and percentage spent on beneficiaries, corrective action recommended on imbalance in fund. So basically अपने को मतलब NPOs को जिस सोर्स से उनका फंड आ रहा है और जिस पे वो फंड यूटिलाइज हो रहा है उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा. Next is disclosure about budgets and its utilization. It was noted that NPOs were not providing information about the approved budget and its utilization, including reasons for under or over utilization. So, But are these disclosures are given in under any regulation or no, sir, it's just the guideline. reporting practices only? Disclosure about budgets and its utilization. It was noted that NPOs were not providing information about approved budgets and its utilization, including the reasons for under and over utilization. The disclosure of information about approved budgets and their utilization, including explanation for any under or over utilization, play a pivotal role in enhancing transparency and accountability within NPOs. अब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने को जो भी एनपीओ ने बजट बनाया और उसका अंडर और ओवर यूटिलाइजेशन वो भी डिस्क्लोज करना चाहिए. This is there, no? Next up, disclosure of use of fund-based accounting. तो इस डिस्क्लोजर में क्या है, जो भी फंड अलग-अलग फंड से एनपीओ के पास अलग-अलग फंड से जो भी पैसा आ रहा है उसका डिस्क्लोजर और उस फंड के अमाउंट कैसे यूटिलाइज किया है उसका डिस्क्लोजर देना है. Government's policy in relation to initiatives of organization. It was observed that organizations have not disclosed about the information as in regards to government policy in relation to initiatives of organization and involvement of government bodies in activities of organization. तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी निकालती है एनपीओस के लिए वो भी डिस्क्लोज करना है. नेक्स्ट इज Next are observation relating to public sector undertaking. क्या है? Information about CSR common theme. It was noted that organizations have not disclosed information pertaining to attendance.
information pertaining to CSR expenditure on common theme, as required by guidelines issued by Department of Public Enterprise. So, common CPSE के लिए कॉमन थीम इशू करती है CSR यूटिलाइज करने के लिए. तो इस साल का कॉमन थीम था हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एंड CSR एक्सपेंडिचर का 60% फॉर्म इस Continue.